हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा आम जो ओपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम को टार्गेट कर चलुँच जो रिविजन सीरीज स्टार्ट करते मॉक टेस्ट स्टार्ट करते तार मॉक टेस्ट नंबर 4 आज डिस्कसन में रहिबो। आज मॉक टेस्ट मु इनक्लूड करछि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया रो टोटल 25 टा क्वेश्चन। तो ए क्वेश्चन सब आम आज डिस्कसन करवा। जदि आपण मानो मो वीडियो भल लगता है ताले चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, वीडियो को लाइक कर नियंतु एवं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपन फेसबुक ग्रुप हो बा व्हाट्सएप ग्रुप हो बा टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर नियंतु। वर्तमान आज स्टार्ट करबा हम आज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है द 6th century BC is regarded as the major turning point in early Indian history. It is associated with which of the following? हमर 6th century BC डा गोटे टर्निंग पॉइंट आइथिला इंडियन हिस्ट्री रे। तो ए सब ए जो 6th century BC टा हमर निम्नलिखित मध्यरु को का सहित एसोसिएटेड अछि बोली पचारला। तो स्टेटमेंट हला यूज ऑफ सिल्वर फॉर द फर्स्ट टाइम, डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज, प्रैक्टिस ऑफ गण ओलिग्राचिस इन महाजनपदस। तो जदि आम सिल्वर डेवलपमेंट कथा देखा, यूज ऑफ सिल्वर कथा देखा, सिल्वर आमर फास्ट टाइम में कोठी यूज होता आम देखी हरप्पान साइड रे आमर किछिटा सिल्वर यूज विषय आम सुराग पाई। तो फर्स्ट सिल्वर आम हरप्पा साइड रो ही जानि पारथिले जे हरप्पान माने हमर सिल्वर यूज विषय आम जानछन्ती। तो एट स्टेटमेंट वनडा हबनी, एटा रॉन्ग हे जो ना ये 6th सेंचुरी कथा पचारला 6th सेंचुरी बीसी रे। तो आम सिल्वर को हरप्पान साइड रो आम व्यवहार करबार हमर पाखर प्रमाण अछि। तो ऑप्शन 1 टा भूल हैला। तो 6th सेंचुरी बीसी रे हमर कॉइन रो डेवलपमेंट हेतिला, ठीक अछि। प्रैक्टिस ऑफ गण ओलिग्राचिस महाजनपद रो प्रैक्टिस रे हमर गण रो व्यवहार हेतिला, एटा मध्ये ठीक अछि। तो एठी हमर केवल दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। देखुन तो तार एक्सप्लेनेशन कथा जो देखिबा, स्टेटमेंट 1 और 2 और स्टेटमेंट देखिए सिल्वर वाज बीइंग यूज्ड सिंस हरप्पान टाइम। आमे सिल्वर को आमे हरप्पान टाइम रो व्यवहार करछन, तेनु स्टेटमेंट 1 ना कोन अछि रॉन्ग अछि। इट इज एन इरा एसोसिएटेड विथ अर्ली स्टेट्स, सिटीज, ग्रोइंग ऑफ यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एटसेट्रा। स्टेटमेंट 3 कथा जदि कहबा, इट इज आल्सो विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ diverse system of thought including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jain texts mention among other things 16 states known as Mahajanpadas. While most Mahajanpadas were ruled by kings, some known as Ganas or Sanghas were oligarchies where power was shared by a member of men often collectively called Rajas. Both Mahavira and Buddha belonged to such Ganas. In some instances, as the case of the Bhaji Sangha, the Raja probably controlled resources such as land collectively. क्वेश्चन नंबर 2 देला हमर किछटा आर्कियोलॉजिकल साइट देला और तार बिलोंगिंग पीरियड देला। आमे कोन करबा ना को पेटा ठीक अछि पचाछि। तो देखो मेहरगढ़ देछि न्यूलिथिक, हंसी देछि पालियोलिथिक, आडिचालामालुर देछि मेगालिथिक आउ डोजाली हैंडलिंग देछि न्यूलिथिक साइड। तो एठी हमर सब गुडा को करेक्ट अछि। मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइड बिलोंग करछि, हंसी पालियोलिथिक साइड, आदिचामालुर मेगालिथिक आउ डाउजाली हार्डिंग ये होछि न्यूलिथिक साइड। तो एठी सब गुडा को ठीक अछि। तो आमे ए जो आर्कियोलॉजिकल साइट आ तार बिलोंगिंग पीरियड आमे को बहिरु पाई परिबा ना हमर एनसीईआरटी बुक रे ओटा हमर इंडिया रो मैप अछि। से मैप को देखिला से मैप रो एक क्वेश्चन टा फ्रेम हेछि। तो से मैप को हम देखले डिटेल आ विषय रे जानि परिबा। देखन ये होछि हमर से एनसीईआरटी हमर एनसीईआरटी बहिर से मैप टा। एठी हमर सब साइड गुडा को मेंशन अछि। जेमते हमर पालियोलिथिक साइड को हमर ट्रायंगल मार्क करा जाय छै, हंसकी कर्नूल केव, नेक्स्ट आसला सेमते हमर आसला न्यूलिथिक साइड को हमर स्क्वायर दे दै छी और मेहरगढ़ बुरझाम ए सब अछि। तो आपण एने मैपटा भलो भाबरे देखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला ट्रेड एंड कल्चर कॉन्टैक्ट्स existed between Indo-civilization cities and those Mesopotamia. One can find the evidence of हमर ट्रेड आ कल्चर रो एक्जिस्टेंस हमर इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया भितर थिला बोले हमें कोथ्रु एविडेंस पाई पारछंदी। तो ऑप्शन रे अछि देखंतु प्रेजेंस ऑफ सिमिलर हाउसिंग पैटर्न इन द बोथ सिटी, occurrence of smaller seals and beads in both places, discovery of Indus Valley texts that discuss trade figures, na all of the above.
तो ये आम ट्रेड थिला बोली आम केमी जानते ना दीटा जाक सैड्रे सिमिलार सील आउ बीड्स मिलती दीटा जाक जगार तो आम एम जानूँ जे दीटा जाक मध्य ट्रेड आउ कल्चर आदान प्रदान होता एक्जिस्टेड थिला तो ये ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखो along with ancient India and Mesopotamia, Indus Valley one of the three early civilization of old world and the three most widespread. Judging from the dispersal of Indus Valley civilization artifacts, the trade network economically integrated a huge area, including partitions of Afghanistan, the coastal region of Persia, northern and western India, and Mesopotamia. For example, occurrence of seal as well as similar carnelian beads, cunbedded pottery, etc. both places in concrete evidence. There was an extensive maritime trade network operating between Harappan and Mesopotamia civilization. Next question. Which of the following Mahajanpadas had the oligarchy from the government? ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ମହାଜନପଦରେ ଅଲିଗାର୍ଚି ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା? ତ ଅପସନରେ ଅଛି ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର, ଭଜ୍ଜି ଆଉ କୁରୁ। ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅଲିଗାର୍ଚି କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଭଜ୍ଜିରେ ଥିଲା। Mahajanpadas were 16 kingdoms or oligarchic republics that existed in the ancient India. Two Mahajanpadas were most probably ଗଣସଂଘ ବା oligarchy republic। ସେ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଜ୍ଜି ଆଉ ମଲ୍ଲ and other side forms of monarchy। ଆଉ ସବୁରେ ରାଜା ରାଜୁତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର oligarchy republic ଥିଲା ଭଜ୍ଜି ଆଉ ମଲ୍ଲ ଦିଟା ମହାଜନପଦରେ। Next question. Consider the following statement. Magadha was one of the 16 Mahajanpadas that emerged as the most powerful state and the center of the vast empire. Ajatasatru was the first king of Magadhan empire. Pataliputra was the first capital of Magadha। तो ये पचार आम करेक्ट स्टेटमेंट कोटा कोटा। स्टेटमेंट 1 कथा जो देखा मगध वाज वन ऑफ द 16 महाजनपद दैट एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल। तो 16टा महाजनपद मधुर मगध सबुठ पावरफुल थिला। तो ए स्टेटमेंट ये ठीक अछि। अजातशत्रु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मगधन एम्पायर। तो एटा अजातशत्रु फर्स्ट किंग नथिले। अजातशत्रु एटा आंसर हबो कोन ना फर्स्ट किंग थिले बिंबिसार। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगधर फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्र नथिला। पाटलिपुत्र को कैपिटल किए शिफ्ट करथिले ना अजातशत्रु शिफ्ट करथिले कोठू ना राजगृह रु। तो आर आंसर हबो पाटलिपुत्र एठी हबोनी एटा हबो राजगृह। राजगृह रु अजातशत्रु पाटलिपुत्र को कैपिटल शिफ्ट करथिले। तो मगधर फर्स्ट कैपिटल होची राजगृह। तो एठी दीटा स्टेटमेंट भूल अछि केवल गोटे ही ठीक अछि। आंसर हबो कोटा ओनली वन। एक्सप्लेनेशन टिके देखनेबा। The political fight among these Mahajanapadas led ultimately one of them namely Magadha to emerge as the most powerful state and center of the vast empire. The earliest important of Magadha was King Bimbisara who ruled 52 years from 544 BC to 492 BC. It seems that he was either killed forced to commit suicide by his son Ajatasattu who was eager to take over the throne himself. Ajatasattu shifted the capital Magadha from Grivaraja Rajagriha to Pataliputra। वर्तमान पाटलिपुत्र कोडी अछि ना मॉडर्न हमर पाटना शहर बिहार रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कोन ना मौर्यस यूज्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। The first coin to bear the names and images of rulers were issued by the Indo-Greeks. Yadhyas of Punjab and Haryana were renowned for issuing copper coins. Both Kushanas and Guptas issued gold coin। तो आमर ये करेक्ट स्टेटमेंट पचाइते ये आमर चारटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि ना मौर्य माने पंच मार्केट कॉइन व्यवहार करथिले सिल्वर आ कॉपर रो। फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स ऑफ इमेजेस को माने प्रचलन करथिले ना इंडो ग्रीक माने करथिले ठीक अछि। यादयास ऑफ पंजाब हरियाणा में रिनाउड फॉर इश्यूइंग कॉपर कॉइन एटा भी ठीक अछि। बोथ कुषाण गुप्त इश्यूड गोल्ड कॉइन एटा भी ठीक अछि। तो चारटा जाक स्टेटमेंट एठी ठीक अछि। जदि हमें कॉइनेज कथा देखिबा ता एक्सप्लेनेशन देखुन। एक्सचेंजेस वेर फैसिलिटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। पंचमार्क कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर केबे ना 6th सेंचुरी बीसी रो ऑनवर्ड्स रे वेर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू बी मेंटेन्ड एंड यूज्ड बाय मेनी डायनेस्टीज इंक्लूडिंग मौर्यंस।
The first coin to bear the names and images of rulers were issued by the Indo-Greeks who established control over the northwestern part of the subcontinent 2nd century BCE. The first gold coin were issued by the 1st century CE by Kusanas. These were virtually identical in weight with those issued by Roman emperors and Pratyahana rulers of Iran. Coins were also issued by tribal republics of Punjab, Haryana called Yadhayas. Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yadhayas. Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta ruler. The earliest coin issued by the Guptas were remarkable for their purity. These coins facilitated long distance transactions from which kings also benefited. Next question. Which of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sungo dynasty? Sungo dynasty founder ro पुओंकर लव स्टोरी विषय रे हमरो को बही रे लेखा अछि? ऑप्शन अछि मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, रत्नावली ना स्वप्न दत्त. तो एडा हमरो लेखा अछि कोठी ना मालविका अग्निमित्रम रे हमरो लव स्टोरी लेखा अछि सुंगो डायनेस्टी रो फाउंडर को पुओंकर. तो मालविका अग्निमित्र गोटे हूँ संस्कृत प्ले जहाँ आम कालिदास रचना कर बेस्ड ऑन सम इवेंट ऑफ द रीजन ऑफ पुष्यमुत्र शुंग एंड इट्स फर्स्ट प्ले. मालविका अग्निमित्र टेल्स द स्टोरी ऑफ लव ऑफ अग्निमित्र. अग्निमित्र होचंती पुष्यमुत्र शुंगकर पुओ. द शुंग एम्पायर एट विदिशा फॉर द ब्यूटीफुल हैंडमेडन ऑफ हिज चीफ क्वीन. Next question. Consider the following statement. The Yavanas are mentioned in detail in Sangama literature epics such as Pattinapalai. The Yavanas engaged in trade with the early Cholos in the Sangama period. तो ये पचारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोट अच्छी. तो आम जो देखा ये दीटा जाक स्टेटमेंट ये ठीक अच्छी. तो आंसर हम कोटा इनकरेक्ट पचारा नेदर वन नॉर टू इज द आंसर. एक्सप्लेनेशन देखो. In Sanskrit sources, the usage of the words yona, ayona, yonaka, yavana, javana appears repeatedly and particularly in relation to Greek kingdoms which neighbor to sometimes occupied in Punjab region over a period of several centuries in 4th century BCE to the 1st century CE. Example are Seleucid Empire and Greco-Bactrian Kingdom and the Indo-Greek Kingdom. Yavanas are mentioned in detail in Sangama literature epics such as Pattinapalai describing the brisk trade with the early Cholos and Sangama period. Next question. Ptolemy, a Greek writer, mentions many important points in Deccan. Among them, the greatest port of the Satavahanas in western Deccan was. Ptolemy कौन करचंदी जने Greek writer जे कि हमरो मेंशन करचंदी केते गुडा डेक्कन रो केते गुडा पोर्ट को डिस्क्राइब करछन. एमंग देम द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ द सातवाहन इन वेस्टर्न डेक्कन रे सातवाहन मानकर ग्रेटेस्ट पोर्ट कोडा ना आंसर होची कल्याणी. एक्सप्लेनेशन देखंतु. वशिष्ठ पुत्र Ptolemy extends the Satavahana power of the mouth of the Krishna river. He issued coins on which the image of ships was inscribed. They reveal the naval power, maritime trade of Satavahanas. Their greatest port was Kalyani on western Deccan. Godakasela and Ganjam on the east coast were the other important seaports. Next question. Consider the following statement. The Satavahanas started the practice of granting tax-free village to Brahmanas and Buddhist monks. The term Kataka and Skandavarsha in Satavahana related to manuscripts refer to land grants. तो ए स्टेटमेंट दिटा मधुर करेक्ट कोडा पचारला. तो आर करेक्ट आंसर कोडा हबो ना. एठी हमर सातवाहन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस ऑफ ब्राह्मण बुद्धिस्ट monk. एटा ठीक अछि. The term Kataka or Skandavarman in Satavahana related to manuscript refers to land grants. A statement of भूल अछि. Correct answer हबो only one. Explanation देखिबा. Statement 1 ना देखंतु. Satavahana started the practice of granting tax-free village to Brahmana and Buddhist monks. The cultivated fields and villages granted to them were declared free from
molestation by royal policemen and soldiers, and all kind of royal officers. These are therefore become small independent islands within the Satavahana kingdom. Possibly the Buddhist monks also preached peace and rules of good conduct among the people they lived with and taught them to respect political authority and social order. Statement 2 କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, military character of Satavahana rule is evident from the common use of such term of Kotaka and Skandhavarsa in their inscription. They were military camps and settlements which served as the administrative center so as long as king was there. Thus, correction played an important part of the Satavahana administration. Next question. Which of the following three kingdoms were involved in struggle of Kannauj? Struggle of Kannauj বা tripartite struggle रे हमरो को डायनेस्टी इन्वॉल्व थिले. तो ऑप्शन अछि चेरो राष्ट्रकूट पांड्य, बी देला पाळ प्रतिहार चोळ, सी देला चोळ पाळ राष्ट्रकूट, डी देला पाळ प्रतिहार आउ राष्ट्रकूट. तार करेक्ट आंसर हबो पाळ प्रतिहार आउ राष्ट्रकूट हमरो कन्नौज स्ट्रगल रे तीन जण इन्वॉल्व थिले. एक्सप्लेनेशन देखंतु. Tripartite struggle for control of northern India took place in 9th century. The struggle was between Pratyahara Empire, Pala Empire, and Rashtrakuta Empire. Towards the end of the successor of Nagabhatta II of the Gurjar Pratyahara dynasty, he successfully attacked Kannauj and established control there. Next question. Consider the following statement. Ashoka's conversion of Buddhism was gradual phenomena and not immediate. Mosque was the first edict of Emperor Ashoka that contained the name of Ashoka. Cholos and Pandyas kingdom were in the integral part of Ashoka's empire. तो ए तीनटा स्टेटमेंट कथा जब देखिबा हमें जो अशोकार बुद्धिज्म रे कन्वर्जन हेतिले एडा होछि गोटे ग्रेजुअल फेनोमेना आउडा इमीडिएट हेइ नथिला एडा ठीक अछि. Mosque is the first edict of Emperor Ashoka that contained the name of Ashoka एडा मध्ये ठीक अछि. चोलो आ पांड्य किंगडम अशोकांग एम्पायर रो पार्ट थिले ना, चोळ आ पांड्य अशोकार एम्पायर रो पार्ट नथिले. तो ए स्टेटमेंटटा भूल अछि. तो एटी दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली टू हबो आंसर. एक्सप्लेनेशन देखिबा. According some scholars, his conversion of Buddhism was gradual and not immediate. About 261 BC, Ashoka becomes Sakya Upasaka and 2.5 years later, Bhikshu monk. Then he gave up hunting, visited Bodh Gaya and organized missions. This shows that he gradually accepted Buddhism. Mosque is the town and an archaeological site in the Raichur district of the state of Karnataka. The site came into prominence with the discovery of a minor rock edict of Emperor Ashoka by C. Braddon in 1915. It was the first edict of Emperor Ashoka that contained the name Ashoka in it instead of the earlier edicts that referred to the Devanam Priyodasi. Ashoka's inscription mentions southernmost kingdom of Cholo, Pandya, and Satyaputras and Keralaputras of border states. Therefore, these states remained outside the Mauryan Empire. Next question. Mongols under Genghis Khan invaded India during the region of Mongol under Genghis Khan amaro India को केबे का पीरियड रे आस्थिले. ऑप्शन अछि बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश आ मोहम्मद बिन तुगलक. तार आर करेक्ट आंसर हो इल्तुतमिश को पीरियड रे चेंगिस खान आक्रमण करथिले भारत को. चेंगिस खान केबे मृत्युवरण करथिले ना 1227 रे से इन्वेड करथिले इंडिया को इल्तुतमिश को पीरियड रे जोडा हमर 1211 रु 1236 तांको पीरियड. Did not enter deep to India. Iltutmish refused to give shelter to the Persian king Khwajuram Shah, whom Genghis Khan was chasing. Next question. Consider the following statement. Mughals were descendants of Genghis Khan. The Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. They celebrated their genealogy, patrology, each other getting the picture made the Timur himself. तो ए तीनटा स्टेटमेंट रो करेक्ट कोडा पचारला. तो एथरे हमरो तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि. Mughals were descendant of Genghis Khan. Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. तो आर एक्सप्लेनेशन देखिबा. फर्स्ट देखिबा मुगल माने किए. मुगल माने किए ना the Mughals were descendants of two great lineages of rulers from their mother side.
they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. फादर साइड रु देखिबा जदि सेमाने होचନ୍ତି सक्सेसर ऑफ तिमूर जे कि 1404 रे मृत्युवरण करथिले, द रूलर ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न डे ऑफ तुर्की. However, Mughals did not like to be called Mughals or Mongols. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud to their Timur ancestry, not least of the because their great ancestor had captured in Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made Timur and himself. Next question. In Mughal India, Malikana was a tax portion related to. तो मुगल पीरियड रे हमर मालिकाना गोटे टैक्स पोर्शन थिला से का सहित रिलेटेड अछि. तो मालिकाना का सहित रिलेटेड अछि ना लैंड रेवेन्यू सहित मालिकाना रिलेटेड अछि. Mughal Empire, Jamindars had hereditary rights for collecting land revenue, which could go up 25% of the revenue. They generally made collections from the individual peasants at rates fixed by the tradition or by themselves and paid the fixed tax to the state. The difference between their collections and amount paid to the state was their personal income. If the state demand reached the maximum that the peasant could pay, a deduction of 10% was made from the total amount of revenue and paid to the Jamindars as Malikana. Next question. Which of the following were advocated by the Bhakti movement? तो ए स्टेटमेंट मध्यरु भक्ति मूवमेंट सहित कोडा रिलेटेड अछि. देयर इज गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इनहेलेशन ऑफ एज ओल्ड caste सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल इरुडिटेशन. तो ए तीनटा मध्यरु कोटा हमर भक्ति मूवमेंट सहित रिलेटेड अछि. तो भक्ति मूवमेंट सहित रिलेटेड भक्ति मूवमेंट रे एडवोकेट थिला कोन ना देयर इज ए गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, एटा ठीक अछि. इनहेलेशन ऑफ एज ओल्ड केस सिस्टम मध्ये ठीक अछि, किंतु कॉन्सेप्चुअल इरोडिशन एथिरो पार्ट नाही. तो एठी दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली टू हबो करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 3 9 करेक्ट अछि. द कंसेप्शन ऑफ भक्ति did away with the allied tradition of Sanskrit and accepted more acceptable languages from the common man. Bhakti also attacked age-old caste system and devoted itself in the worship of humanity, because the catchword of Bhakti is that God is there every human being. The movement was in essence subterm as most its poets belonged to the so-called lower castes. Bhakti is an anti-technology, anti-theology and against any kind of conceptual erudition. Next question. Consider the following statement regarding Bhakti tradition. Bhakti tradition विषय रे किछि स्टेटमेंट देला, मु करेक्ट स्टेटमेंट बाछियार अछि. तो ऑप्शन ए कदेला वेदस वेर कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय भक्ति साइंस. ना वेद को कंप्लीट रिजेक्ट करा जाय नथिला. द प्रिंसिपल ऑफ डाइटिस ऑफ वैदिक पीरियड लाइक अग्नि, इंद्र, सोम become marginal figure and rarely visible to the textual visual of representation. एटा ठीक अछि. Devotees often tended the project their chosen deity, either Vishnu, Shiva as a supreme. तो एटा भी ठीक अछि. एटा दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली टू आर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन देखंतु. The principal deity of Vedic pantheons, Agni, Indra, Soma, become marginal figure, rarely visible in textual or visual representation. And while we can catch a glimpse of Vishnu, Shiva and goddesses in Vedic mantras, these have little in common with the elaborated Puric mythologies. However, in spite of these obvious descriptions, the Vedas continue to be revered as authoritative. Not surprisingly, there were sometimes conflicts as well. Those who valued the Vedic tradition often condemned practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely catched mantras. Also, devotees often tended to project their chosen deity, either Vishnu or Shiva, as supreme. During this time, expressions of devotions ranged from the routine worship of deities within temples to ascetic adoration where devotees attended trance-like states.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भक्ति सेंट रामानंद। भक्ति सेंट रामानंद को विषय रे हमर किछटा स्टेटमेंट अछि, हमें सेथु हमर करेक्ट आंसर कोडा देखिबा। स्टेटमेंट ए कदला, he founded his own sect based the doctrine of love and devotion to Lord Krishna and Radha। तो भक्ति सेंट रामानंद जदि कथा कहबा जदि से कृष्णा और राधांकर डिवोशन नै, से कृष्णा राधा बदल सेडा हो कोन राम आउ सीता। he preached quality before God, ए स्टेटमेंट ठीक अछि। he was a disciple of भक्ति सेंट कबीर, से कबीर को डिसाइपल नथिले, कबीर एंकर डिसाइपल थिले। तो ए स्टेटमेंट भी भूल अछि। तो एटी गोटे ही स्टेटमेंट ठीक अछि, आंसर हबो ओनली वन। एक्सप्लेनेशन देखंतु, रामानंद बिलोंग टू रामानुजस philosophical thought। he visited his holy places of North India and preached Vaishnavism। Ramananda introduced radical changes of Vaishnavism by founding his own sect based on the doctrine of love and devotion of Rama Sita। he preached equality before God। he rejected caste system, particularly the supremacy of Brahmins as the sole custodian of Hindu religion। the people from the lower shastra of the society becomes his followers। his 12 disciples including Ravidasa, Kabira and two omens। Ramananda was the first to preach his doctrine of devotion in Hindi and vernacular languages। Next question, as for Sufism, tasawwuf means consider a ritual more important than self-discipline in reaching the highest goal, stressed the element of love and devotion as effective means of realization of God। तो एठी हमर ऑप्शन दुईटा ठीक अछि, तो गोटे स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला सूफी सिलसिला बेर। सूफी सिलसिला कौन? ऑप्शन हला एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ द प्रोफेट, chanting practices taught by the master, pilgrimage to the tomb of Sufi saints, holy location signifying the final image of Sufi matter। तो सूफी सिलसिला कौन? सूफी सिलसिला होची an unbroken spiritual genealogy of the prophet। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement। battle of Hydaspes was fought between Alexander and Puru। Alexander never crossed the Indus river during his expedition। तो ए तीटा स्टेटमेंट कथा जो देखिबा, बैटल ऑफ हाइदास्पेस हेतिला का मधरे अलेक्जेंडर और पुरु मधरे हेतिला। तो ए स्टेटमेंट एठी करेक्ट अछि। अलेक्जेंडर नेवर क्रॉस्ड इंडस रिवर ड्यूरिंग हिज एक्सपेडिशन। तो ए स्टेटमेंट एठी भूल अछि, से इंडस रिवर पार करथिले। तो एठी ऑप्शन ए कहबो करेक्ट, से पचाछि इनकरेक्ट पचाछि, तो ऑप्शन बी हेबा आर करेक्ट आंसर। तो बैटल ऑफ हाइदास्पेस केबे हेतिला ना, बैटल ऑफ हाइदास्पेस हेतिला 326 बीसी रे बिटवीन अलेक्जेंडर एंड ग्रेट किंग ऑफ पुरु ऑफ पौरव किंगडम। कोडी हेतिला ना बैंक्स ऑफ रिवर जिलम रे इन द पंजाब रीजन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन 327 बीसी। अलेक्जेंडर क्रॉस्ड द हिंदुकुश माउंटेन एंड स्पेंट नियरली द 10 months in fighting with the tribes। he crossed the Indus in February 326 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका को एडिक्ट विषय रे किछि स्टेटमेंट देला। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वेर फर्स्ट डिसिफियर्ड इन जेम्स प्रिंसिप। तो अशोका को जो इंस्क्रिप्शन देला फर्स्ट किए चिन्हिथिले बा पढिथिले, जेम्स प्रिंसिप पढिथिले। तो स्टेटमेंट ठीक अछि। मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड इन बाराबारा केव, एडा भी ठीक अछि। अशोका रेफर्ड हिमसेल्फ एज द बिलोव्ड सर्वेंट ऑफ द पीपल, जन्म प्रियदासी इन दिस इंस्क्रिप्शन। तो एटा जन्म प्रियदासी होबनी, एटा हबो कोन ना देवम प्रियदासी होबो। तो एठी दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली टू होबो आरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ड्यूरिंग महाजनपद। महाजनपद पीरियड रो टैक्सेशन सिस्टम विषय किछि स्टेटमेंट देला, हमो करेक्ट स्टेटमेंट बाछियार अछि। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन्स, there were also taxes on goods and were bought in the sold through trade। there were no taxes on agricultural। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी ठीक अछि। ऑप्शन 3 रे सेतले there is no taxes on agricultural, नै एग्रीकल्चरल ऊपर मध्ये टैक्स थिला। तो दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, ओनली टू होबार करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखंतु, ए द रूलर ऑफ द महाजनपदस वेर बिल्डिंग ह्यूज ऑफ फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, they needed more resources and they needed official to collect these, so they started
collecting regular taxes. There were taxes on craft persons. They could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month in the king. There were also taxes on goods they are bought and sold through trade. Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually, the tax was fixed on 1/6 of that what produced. This is known as the bhago or share. Next, consider the following statements with reference to the history of metallurgy in the Indian subcontinent. Yearly gold and silver ornaments from the Indian subcontinent can be found in Indus Valley sites of Mohenjo-daro. तो एटा ठीक अछि हमरो गोल्ड और सिल्वर एविडेंस मोहनजोदारो मिलिथिला. The Rashtrakutas ascribed to the Indian scientist Nagarjuna describes the method of the production of the zinc. एटा मध्ये ठीक अछि राष्ट्रकूटଙ୍କ ସମୟରେ साइंटिस्ट नागार्जुन थिले जे कि हमरो जिंक प्रोडक्शन विषय रे मेथड बाहर करथिले. The non-rusting iron pillar Mohoroli is dated by inscription of the Gupta period. Mohoroli रे जो iron pillar अछि non rusted रो से गुप्त पीरियड को बिलोंग करे. एटा मध्ये ठीक अछि. Woods produced in the India from the early Christian era is remarkable for low carbon used in the synthesis of steel metal. तो ए पॉइंट एटी भूल अछि. तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि. ओनली 3 ऑफ करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 कथा कम भूल अछि ना. इंडिया हैज बीन रेपुटेड फॉर इट्स आयरन एंड स्टील ग्रीक Romanian times with the earliest reproduction finding high carbon steels in the world coming from the early Christian era. Urj is the Agricultural version of Ukku in the languages of the state of Karnataka and Andhra Pradesh, a term denoting steel. Studies of Urj indicate that it was an ultra high carbon steel with between 1-2% carbon and was believed to have been used in fashioned Damascus bladers with a watered steel pattern. Next question. The Battle of the Tarain is related to Battle of Tarain कागु related अछि. Option देला a Hindu princess of North India fighting against Muhammad Ghori, the battle between Maharathas and Rajputas, revolt of Gujarati kingdoms and Muhammad Ghazni, land battles of seen between Muslim and princes. तो एटा अछि हमरो Hindu princess of North India fighting amongst Muhammad Ghori होबार correct answer. The Hindu princes of North India formed the confederacy under the command of Prithviraj Chauhan. Prithviraj defeated Ghori in the Battle of Tarain in Delhi in 1191 AD. In the ensuing Second Battle of Tarain, 1192, Muhammad Ghori thoroughly routed the army of Prithviraj, who was captured and killed. The Second Battle of Tarain was a decisive battle. It was a major disaster in the Rajputas. Their political prestige suffers and serious attacks. तो ये थिला हमरो मॉक टेस्ट नंबर 4 जो थरे हमरो आमे डिस्कशन करले एंशिएंट और मेडिवल इंडिया रो 25 टा क्वेश्चन. नेक्स्ट मॉक टेस्ट रे मु पुनी आ गोटे टॉपिक रो इंक्लूड करि आनिबी. थैंक यू फॉर वाचिंग.